ब्रेक लेते हैं कॉल जी फरमाइए I think we were answering the last question. Yes, please, Mr. Mila, the last question, just before we go on to the next please. call. She was asking about her having been sponsored in the United Kingdom. She's on a scholarship in the UK. And she's got a scholarship. Now, she wanted to know whether she could apply for indefinite leave to remain. Of course, there is the 10-year route which allows people to, if they've been lawfully resident in the UK, to apply to be here on an indefinite leave basis. However, if you have been sponsored by a third party such as a university or the state government, there will be an undertaking that you would have given that you return back to your country in order to do a certain job or fulfill a certain university post. In those circumstances, you are not entitled to apply for indefinite leave to remain because that was a condition upon which you were here in the United Kingdom. But if she take the consent from the authority and they waive this condition, then she's eligible. But of course, if you can talk to your scholar people and a sponsor, if they're allowing you and they're waiving the condition, then of course you can apply. But I believe in most of the cases, if anybody comes for the sponsorship, they have a responsibility and undertaking. They are serving back their home country for certain times. Anyway, check your, I think, undertaking and the declarations, what you have given to the university. Thanks for call. लेते हैं next call जी फरमाइए. जी फरमाइए. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी सबसे पहले तो रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया. एक दफ़ा हमने आपको कॉल की थी और आपने फ्री में हमें एडवाइस की थी. बहुत कम लॉयर ऐसे होते हैं. जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट. और आपको ये बताना है कि हम लोग 2010 में आई थी. मैं अपने 2 बच्चों हस्बैंड के साथ. एक मेरा बच्चा इधर पैदा हुआ है. हमें सितंबर 2017 को ना 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे. तो हमने 7 ईयर पे किया, वो रिफ्यूज हो गया. और अब ये हुआ है कि फिर जनवरी 2018 में मेरा बेटा 18 ईयर्स का हो गया. तो अब कुछ अर्से पहले इन्होंने हमें 1 स्टॉप लेटर भेजा. फिर बाद में हमें बायोमेट्रिक्स के लिए आया और हमें कार्ड मिल गए सबको. अल्लाह का शुक्र है. लेकिन उन्होंने मेरे 18 ईयर्स का जो बेटा हुआ है उसका कुछ भी नहीं भेजा. उसको शामिल ही नहीं किया बीच में. तो मैं इतनी परेशान हुई कि 8 साल बाद में स्टेटस मिला और मेरा बेटा जो 10 साल का था जब इधर आया है उसको शामिल ही नहीं किया. और मुझे इतना डर लग रहा है कि कहीं बाकी फैमिली को मिल गया आपके वीजा, राइट? तो क्या करें इसके लिए? You don't have to worry about this. This is not a difficult case. This is obviously some mistake has been made in the original application, or you now need to make, if it isn't a mistake, if it is that his decision has been dealt with, it doesn't sound like it has. I think what the Secretary of State has done, he's given you discretionary leave. He's given your other family members, your children who are under 18 discretionary leave. One child he hasn't given discretionary leave to. How old is that child? He's 18 now. Right. That child therefore has to, you have to first of all think whether that child was under 18 at the time you made your application. If that child was under 18 at the time that you made your application, he should also be granted indefinite leave to remain in line with you. If he was not at the time you made your original application, that is led you to be granted with indefinite leave to remain. If he was not, then you have to make another application. That other application has to be made by your son as an adult, and he has to apply under 276 ADE to explain that he is. जो नबीला कह रही हैं वो बेसिकली इंडेफिनिट का मतलब ये कि सॉरी आपको फर्दर लीव टू रिमेन मिली है. जो आपको फर्दर लीव टू रिमेन मिली है आपकी और जो अंडर 18 जो आपकी फैमिली है उनको मिल गया है. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको होम ऑफिस को एक सबमिशन देना पड़ेगा कि द डे यू मेड द एप्लीकेशन उस वक्त बच्चे की उम्र 18 साल से कम थी, तो उसको भी आपके साथ ही वीज़ा मिलना चाहिए. वो ये 10 का जो 10 ईयर्स का रूट है इसमें सारी फैमिली को जॉइन करते हैं. लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आपने ये इस्टेब्लिश करना होगा विद एविडेंस या जो भी आपने डिक्लेरेशन देनी होगी कि जो उसने अपना जो प्राइम टाइम उसका लाइफ का है, जो स्पेशल एज ऑफ 8 से लेके 10 से लेके 18 तक जो 8 साल गुजारे हैं, उससे वो एजुकेशन से और जो सोसाइटी से वो बड़ा इतना इंटीग्रेट हो गया है कि वापस जाके अपनी कंट्री में सेटल नहीं हो सकता. This is the further leave to remain. You're right, but the only problem here is further leave to remain. Further leave to remain on the basis of the 7 years. But the problem is
even with further leave to remain, he's Yep. over 18 years of age. Yep. So he falls into the bracket of 18 to 24. 18 to 25, yes. 18 to 25. Yep. So he has to show not He's only established life here. he has to show the length of time he's been here, the connections he has, and the lack of connections he has to his parents' country, Yep. and also, for instance, if he's embarked upon university education, the investment Yep. that has been made in the university education, his plans for the future. For instance, if he wants to do engineering, maybe he's got a job with an to do. मेरी बहन वरी ना to करें, do आप job. इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लें। पहली बात तो खुशी है कि आपको वीज़े मिल गए आपकी फैमिली को, लेकिन आप उसका भी दोबारा लेटर लिखें। मेरे ख्याल में उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर ना हुआ तो आप उसकी फर्दर एप्लीकेशन डाल के उसको यहाँ पे वीज़ा आपके साथ मिल जाएगा, ना चाहना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, आई थिंक मुझे लगता है कि कॉल आपकी ड्रॉप हो रही है। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, रियाज साहब, मैं फारूक अर्ज कर रहा हूँ। जी फारूक साहब फरमाइए जी। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने अपने पेरेंट्स का अप्लाई किया था लीव टू रिमेन के लिए, राइट, और उनका अब 7 माह बाद मुझे उनके फिंगरप्रिंट आए हैं। अब Right. तकरीबन ये 1 सितंबर को हमने फिंगरप्रिंट दिए हैं। हाँ हाँ। तो अभी यानी कि ये बताएं कि इसको कितना टाइम लगेगा मजीद, क्योंकि इसमें काफी 4 से टाइम 6 माह लगते हैं। आप रिलैक्स हो, आपको फिंगरप्रिंट हो गए हैं, 4 से 6 माह लगते हैं, लेकिन इसमें साल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली होम स्टे के 6 मंथ। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी हाँ जी, हेलो जी फरमाइए। जी, रियाज भाई से बात करनी, 2-3 दफा उन्होंने बोला आप नेक्स्ट नंबर पे, पर पता नहीं फिर क्या हो जाता कोई बात नहीं, आप लाइव हैं, मैं रियाज बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए भाई, सवाल क्या आपका? जी है। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई एंड नबीला। वालेकुम सलाम भाई, Assalamu फरमाइए। alaikum. I've got 2 questions for Nabila. या प्लीज गो अहेड। Should be Yes, short, please. Nabila, I'm just going to ask you generally, see when someone's appeal is allowed for the human rights cases, and the Home Office challenged the decision. So what does it normally mean? The judge made a wrong decision, or the judge did not do the interpretation of law? It could mean And the second short question is, या प्लीज। so when they apply for a permission to the upper tribunal, normally, I'm not going to ask you, give me 110% exact and accurate answer, just general from your experience, all right. because you're a barrister. Just So normally the upper ask tribunal, question. when they apply for a permission, do they normally get the permission or no? It's a really, really difficult question that you've asked me, because what you're saying to me, you're asking me to say, statistically, what are the chances of the Home Office getting permission on appeal? I'd have to see the grounds to give you my assessment as to the prospects of the Home Office's appeal. The Home Office does appeal decisions made by the Secretary, by an immigration judge, if there is an error of law, or if, in the opinion of the Secretary of State, there has been some mistaken interpretation. That doesn't mean, even if they get permission to appeal, that it would be successful in front of the upper tribunal. Because remember, when you're dealing with things on paper, you have a very cursory overview of all the facts. You don't know what evidence has been heard by the immigration judge, who may not have detailed everything in the decision. There may be inadequacy of reasoning. How long takes normally? Well, it's 3 a months. backlog right now. It can take up to, it can take months for a decision to come. It can take months for a decision from the upper tribunal by way of a hearing, if they get permission. Look, I wouldn't become anxious. Your appeal has been granted. You're in a better position to have your appeal upheld than somebody's having to appeal, having had their appeal disallowed by the first-tier immigration judge. So wait patiently. Ensure that you have legal representation before the upper tribunal, who will be able to fight the legal arguments that are put against the appeal having been allowed. Thanks for your call. लेते हैं next call जी फरमाइए। Hello. Oh, you've got to put the TV off. Speaker बंद करें। Hello. हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, अभी हमने 1 हफ्ते पहले स्टेटलेस एप्लीकेशन रखी हुई है, राइट, और हमारी नेशनलिटी इंडियंस है, तो हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वो यूके बी के पास है। तो जैसे कि ब्रिटिश पासपोर्ट बच्चे का आता है, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं वीजा के लिए,
तो उसमें मेरे सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं हो तो चलता है, और कोई हमारा टोएक का एक मसला था जो आपको पता होगा, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा वीजा में। आपने वीजा अप्लाई कर दिया, करना भी एप्लीकेशन? हाँ जी। आपने स्टेटलेस जो चाइल्ड वाली एप्लीकेशन वो डाल दी कि डालनी है अभी आपने? नहीं, डाल दी, 1 हफ्ते पहले डाल दी है। योरसेल्फ या बाय सॉलिसिटर? बाय सॉलिसिटर। ओके, अब सवाल क्या फिर आपका भाई? सवाल ये है कि जैसे मेरे बच्चे का पासपोर्ट आता है, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, तो उसमें मेरे सर्टिफिकेट अगर हमारे पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और टोएक का कोई इशू तो नहीं होगा वीजा अप्लाई के लिए? ओके, थैंक यू आपकी कॉल का। सबसे पहले वेट करेंगे जब आपके बच्चे को वीज़ा मिल जाएगा, वो स्टेटस अप्लाई कर दिया, आप उस पर कोई कमेंट्स करना फ़ायदा नहीं। आप वेट करें जब वो डिसीजन आएगा, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन डालना। और ऑफ कोर्स आपने किसी चीज़ को हाइड नहीं करना, बट क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का केस है, उसमें आपके कोई टोएक का इशू था भी तो वो उसको होम ऑफिस डिसाइड करेगा। लेकिन डोंट हाइड एनीथिंग, इन्फॉर्मेशन दें सारी एप्लीकेशन में, फिर लेट देम डिसाइड कि होम ऑफिस क्या डिसाइड करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने 2000 ईस्वी में मेरे 11-12 साल हुए, मैं 2008 में आया था, ठीक है। ओके। तो मैं 2016 में 10वीं महीने में मैंने असाइलम किया था, तो मेरा इंटरव्यू भी हुआ। फिर 1 साल बाद उसका रिजल्ट है वो मतलब है रिफ्यूज हुआ, तो मेरे को अपील का राइट दिया, ठीक है। तो अपील भी अभी दिसंबर 2000 आने वाले दिसंबर में 17 को। तो जो रीजन दिया था वो मेरा आपसे सिर्फ 2 सवाल है कि जो रीजन भी मेरे को रिजेक्ट किया था, उसने बोला कि कंट्री एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं है, एक। दूसरी बात कि जो मेरे पर टॉर्चर हुआ, मेरे पास स्केयर है ना सर में, और जो मेरे जिस्म पे जो टॉर्चर हुआ वो निशानात है, उसको मेरी लीगल एड के सोलिसिटर है, उसने उसको मतलब है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर के लिए मेरे को रिफर किया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज के केस की जो कहानी है बहुत। आप कहाँ से हैं भाई? आपकी नेशनलिटी क्या है? मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरे को फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर क्यों रिफ्यूज किया, और एक दूसरा ये कि एक्सपर्ट ओपिनियन ये क्या होती है? मिस्टर मिला, आपकी अपील होगी कि नहीं? अपील डिसमिस हुई है या होम ऑफिस से डिसीजन हुआ आपकी डिसमिस? नहीं, वो पेंडिंग है, 17 दिसंबर को है। Okay, आपकी hearing है. Mr. Mila, I think he claimed asylum is refused. Now he has an appeal on the December. So just only need to just get the evidence, right? Well, the thing about your asylum appeal, asylum appeal hearings are important. You can't underestimate that you need to provide evidence to support your claim. Yep. So everything that you've said to the Secretary of State previously needs to be addressed but elaborated. So you have to widen what you've said previously in greater detail, providing information why you're seeking protection in the UK, why it is that you can't go back to your home country, what the circumstances are. But the thing is, it's not enough to say that my life was under threat in the area in which I lived in. You've got to address why you can't live in any part of the home country. And that sometimes is problematic because your country is big, and so the immigration judge is going to want to have evidence that supports your account that you can't live in another part because you can't find work in that part, because you will be tracked down in that part, because you won't be able to have any social support. It's a number of reasons that you can put forward. It depends on the type of claim that you have. I don't know what your asylum claim is about, but you must ensure that it's detailed and supported by evidence. I think जो आपका सवाल है, जो apart adding to the Nabila's answer, कि जो आप कहना चाह रहे हो कि जो आपने क्लेम करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अगर वो चीज़ों को कंसिडर नहीं किए या कोई फर्दर एविडेंस आपके पास है तो वो भी आप कोर्ट में लेके जा सकते हो. सो दिस इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पुट ऑल द एविडेंस फॉर योर क्लेम. सो ये क्लेम जो जा रहा है, सो मेरी आपको बड़ी सिंसियर और ऑनेस्ट एडवाइस होगी. सो कोशिश करें कि बिफोर यू गो टू द जज जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो अपने वकील को या आप खुद उसको सबमिट करें, ताकि उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे जो फाइनल डिसीजन आएगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा, तो यस आप फर्दर एविडेंस आप इसमें एडअप कर सकते हैं. आपकी कॉल का शुक्रिया. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. जी फरमाइए. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी
राजी मेरा राजी बोल रहे हैं। जी फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने स्पाउस वीजा अप्लाई किया था, वो होम ऑफिस के वजह से रिफ्यूज हो गया था, फिर मैंने अपील की तो होम ऑफिस से मुझे एक ईमेल आई 10 अगस्त को कि हम आपकी अपील एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना लिस्ट विड्रॉ कर रहे हैं। राइट। अगर हमें ट्रिब्यूनल से विड्रॉल काउंसिल मिल जाए तो। राइट। तो फिर हमने ट्रिब्यूनल को लिखा, हमने काउंसिल दी उसको। 20 अगस्त को हमें लेटर भी आया ट्रिब्यूनल से कि हम आपका ना डिसीजन विड्रॉल काउंसिल भेज रहे हैं। तो अभी ट्रिब्यूनल कह रहा है कि ये जज के पास है आपका केस। क्या आपने कंसेंट ऑर्डर साइन किया था? क्या किया था जी? आप लोगों ने कंसेंट ऑर्डर साइन किया था? हाँ, फिर हम कंसेंट ऑर्डर साइन कर लिया था ना, लेटर भेजे तो उसको कि हम कंसेंट दे रहे हैं कि आप अपील विड्रॉ करते हैं, क्योंकि होमवर्क के साथ हम आपको वीजा दे रहे हैं, हम अपना डिसीजन विड्रॉ करें अगर आप कंसेंट देते हैं अपील विड्रॉ करें। राइट। बिस्मिल्लाह प्लीज, आई थिंक they just well you've entered into a consent agreement. Yeah. So your case is being reconsidered. You have to simply wait patiently. I don't really understand what question in all of this that you have, because you've already said what has happened, and that is all very positive. So I don't know how else I could assist you, unless you have something specific to ask. I will assist Nabila Malik. Basically आपका जो consent order है वो साइन हो गया है, आप वेट करें। नॉर्मली इस तरह के केसेस में 3 to 4 मंथ लगते हैं कि होम ऑफिसर डिसाइड करता है। अगर लेट से 6 माह से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके वकील के पास राइट है कि उनको लेटर लिखे, फ़ोन करें कि भी आपने कंसेंट और साइन किया था, 6 मंथ हो गया, डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, हमारा कांट काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम में जा रहा है। तो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर 2-3 माह हुए तो वेट करें, लेकिन 6 मंथ के बाद उसको आप पूरा चीज़ कर सकते हैं। बट एनीवे आप थोड़ा सा पेशेंट आपको दिखाना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। स्टे नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं।